Hello everyone, good afternoon to all of you. I, Anupama, welcome you all at the Saval classes. Today is our lecture number 13 of the MCQ series for the preparation of NT UGC Net English subject. So I hope again you all are prepared according to the homework which I gave you yesterday for preparation. कि जिनमें से आज आपको MCQs डिस्कस करे जाएंगे. हाँ जी, सपना, गुड आफ्टरनून बच्चे. Very soon you all will be informed about the paid group, right? हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको बड़ी जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हमारे प्रोसेस के बारे में, प्लान के बारे में. All right. So let's start with the question series for today. And before the question series, again there is an information as usual. So you just have to send योर नेम एंड यूजीसी सब्जेक्ट. आपको अपना नाम और यूजीसी का सब्जेक्ट लिख के व्हाट्सएप करना है इन दोनों में से किसी भी नंबर्स पे एंड यू विल बी एडेड इन द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, राइट? जिनका ऐड नहीं हुआ है, मैसेज भेजा हुआ है, जस्ट बेयर विद अस, बी पेशेंट, और आपको जो है ग्रुप में जल्द ही ऐड कर लिया जाएगा, राइट? सो द क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे. सो द एमसीक्यूज आर टुडे related to university wits and Shakespeare. All right. चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जस्सी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चे. I hope you also are fine. हाँ जी. So in 1594, Nashe published what many scholars regard as the first novel written in the English language. What was this important work? नैश का वर्क है जिसको कि फर्स्ट नॉवेल बोला जाता है रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज. इज इट हम्फ्री क्लिंकर, क्राइस्ट टीयर्स ओवर जेरूसलम, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर और द टेरर्स ऑफ द नाइट? गुड आफ्टरनून राजविंदर. यस, एब्सोल्युटली राइट सपना एंड शाइना. आप लोगों ने बड़ी जल्दी और बिल्कुल सही जवाब दिया. इट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर. वेरी राइट सिमरन. Very good. Okay, then we have is question number 2. Who is named as the killer of Christopher Marlowe? Christopher Marlowe was just 29 years old जब उनका मर्डर हो गया था. ठीक है, he was killed in a brawl. So who was his murderer? Robert POLEY, Sir Thomas Walsingham, Nicholas Skeers or Ingram Fraser? Who was the killer, the murderer of Christopher Marlowe? Yes, Sapna and Simran, your answer is absolutely correct बच्चे. Nancy, आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया. Yes, it is Ingram Fraser. Absolutely right. He was killed in a brawl, right? एक गैदरिंग में जो है इनको मार दिया गया था. हाँ जी. हेलो नैन्सी. हाँ जी, रशपाल, आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3. Hero and Leander, written by Christopher Marlowe, is based on what type of myth? Is it based on Greek myth, Egyptian myth, Roman myth or Babylonian myth? हाँ जी, किस myth पे based है Hero and Leander, written by Christopher Marlowe? Yes, it is based on हाँ जी नैन्सी, जैसे ही आपकी पोस्ट दोबारा से अनाउंस होती हैं बच्चे, लाइक वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट, और हमें उम्मीद है कि जैसे ही ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस है वो वाइंड अप हो जाते हैं, 17th of February तक उनका रिजल्ट वगैरह अनाउंस हो जाता है, तब गवर्नमेंट का जो है नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है कि आपकी और पोस्ट अनाउंस होंगी, चाहे फिर वो लेक्चरर्स की हैं या मास्टर केडर की हैं दोबारा से. सो ऑब्वियसली वी विल अगेन स्टार्ट विद द प्रोसेस, राइट? Yes, it is based on Greek myth. It's based on Greek myth, right? Greek myth पे based है Hero and Leander. All right. Then we move on to question number 4. Very good, Shaina. Your answer is absolutely correct.
In which play Thomas Nashe contributed with Marlowe for its completion? थॉमस नैश ने कौन से प्ले को कंप्लीट करने में मार्लो की मदद करी थी? हेलो एंड गुड मॉर्निंग तक्ष. Edward II, Tamburlaine, Dido the Queen of Carthage, the Jew of Malta. So I hope you are absolutely fine, Taksh. Right, yes, it's Dido. Nancy, Sapna, Shaina, Minakshi, your answers are absolutely correct. It is Dido the Queen of Carthage. Right? Minakshi, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है बच्चे. Question number 5. How many writers are there in the scholarly group University Wits? It's an easy one. कितने total writers हैं University Wits का part? 7, 6, 5 और 8. How many writers are there in the University Wits? Very good, Taksh. Congratulations to you. I'm really happy for every one of you. There are total 7. There are total 7. There are total 7. Thomas, Nashe, Thomas Kidd, Thomas Lodge. ठीक है, जिनके फर्स्ट नेम थॉमस हैं. देन जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, एंड क्रिस्टोफर मार्लो. हाँ जी, एक के बारे में कह दिया जाता है बच्चे, एक के बारे में कह दिया जाता है, बट स्टिल देयर आर 7. बिल्कुल सही है आपका. किड, थॉमस किड को लेके थोड़ा सा जो है वो राइटर्स लिखते हैं कि इनके बारे में श्योर नहीं है इफ ही शुड बी इंक्लूडेड इन द यूनिवर्सिटी विट्स. वन मोर आई एम फॉरगेटिंग. थॉमस नैश, किड, लॉज, जॉन लिली. इट्स जॉन लिली. राइट? हाँ जी, ठीक है. तो किड के बारे में कह दिया जाता है, बट 7 इन टोटल. कहीं पे भी आप पढ़ो, देयर आर 7 इन टोटल. Right? All right. Question number 6. In which year the Massacre at Paris by Christopher Marlowe got published? 1593, 94, 95 और 96. The Massacre at Paris किस ईयर में पब्लिश हुआ था क्रिस्टोफर मार्लो का प्ले? बच्चे, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, खुद भी. तक्ष, I was just guiding you, but the best thing is कि आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सब चीजें फॉलो करी, कवर अप करी, and that is why you all made it. My prayers, my blessings are always with you all, and I'm doing it every day, Taksh. हाँ जी, yes, it's 1593. Very right. Shaina, Sapna, Sonia, your answers are absolutely correct. Question number 7. Who replied to Marlowe's poem The Passionate Shepherd to his love with the poem The Nymphs Reply to the Shepherd? पहले मार्लो ने पोएम लिखी The Passionate Shepherd to his love, और उसको जवाब देते हुए किस राइटर ने ये पोएम लिखी थी The Nymphs Reply to the Shepherd? जॉर्ज पील, थॉमस किड, इनग्राम फ्रेजर और वॉल्टर रेले. Who wrote this poem The Nymphs Reply to the Shepherd? It is written by Walter Raleigh. Nancy, your answer is right. It is written by Walter Raleigh. All right. Question number 8. Shakespeare wrote several plays, but one special genre was perfected by him. Which genre he perfected? Romantic comedy, comedy only, tragedy only और tragedy tragic comedy. ठीक है, देखो हमने क्लियर कर दिया कि बहुत सारे प्लेज लिखे जो है शेक्सपियर ने, लेकिन एक यानर को उन्होंने परफेक्ट करा. ठीक है, ट्रेजेडीज तो उससे पहले भी लिखी जा रही थी, ये मार्लो ने भी लिखी थी, किड ने भी लिखी, लेकिन जो है जो यानर
शेक्सपियर को परफेक्ट करने का क्रेडिट जाता है, दैट इज रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, जैसे उनकी मिड समर नाइट्स ड्रीम है ना बच्चे, जैसे उनकी मिड समर नाइट ड्रीम है, ठीक है बच्चे। तक्ष, आई एम थैंकफुल टू यू ऑल हैव मेड मी प्राउड। आप लोगों ने मुझे प्राउड फील करवाया। आई एम लकी टू हैव यू एज माई स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे एज यू लाइक इट है, लव रिलेशनशिप्स दिखाए है ना, और साथ में कॉमेडी भी है, राइट। Midsummer Night Dream and As You Like It, that they are the form of romantic comedies written by Shakespeare, and this is the genre he perfected. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, which is considered to be the last play written by Shakespeare? The Winter's Tale, Cymbeline, The Tempest, or Cardenio? Last play written by Shakespeare. The Winter's Tale, Cymbeline, The Tempest, और Cardenio? आज मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस लेके आई हूँ, यूनिवर्सिटी विद से रिलेटेड, शेक्सपियर से रिलेटेड, राइट। हाँ जी सपना, इट्स मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट्स मिडसमर नाइट्स ड्रीम। सो यस, द राइट आंसर इज टेम्पेस्ट। Nancy, Sapna and Simran, you all are absolutely correct. The Tempest is considered to be the last play written by Shakespeare. China, very right बच्चे। Question number 10. Who called William Shakespeare an upstart crow? Robert Laffan, Annette Joliana, Robert Greene और Lucrence? शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो किसने बोला था? जैसे क्रो जो अपने बच्चे जो है वो मैना के जो है नेस्ट में डाला था, है ना, तो शेक्सपियर को अपस्टार्ट क्रो कहा कि शेक्सपियर ने वही एक बेस जो है यूज करा जो मार्लो ने तैयार करा था, और क्रेडिट सारा का सारा शेक्सपियर को मिला। यस, इट इज रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, अपस्टार्ट क्रो को क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 11. Shakespeare and his theatre company built a theatre along the River Thames in London in 1599. What is the name of this famous theatre? Globe, King's, State, or Metropolitan? That is a very easy question. The theatre related to William Shakespeare. Yes, absolutely right. It is Globe Theatre. और ये डेट साथ में मेंशन कर दी कि ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, ये भी याद रखेंगे। It established in 1599. It's the Globe Theatre. All right. Question number 12. Why that group of 7 scholarly writers referred to as the university wits? हाँ जी, जो 7 scholarly writers हैं उनको university wits नाम क्यों दिया जाता है? Because they taught at universities, because they did study from either Cambridge or Oxford, because they lived in university area, or all of these. What is the basic reason behind they being called as university wits? Yes, again it was an easy one, because they did study from either Cambridge or Oxford. All right, because they did their study from Cambridge or Oxford University, the renowned universities in the world. Question number 13. Which of these is the first Picarus novel? Picarus novel, I hope you must be aware of it, जो कि एक रोग के बारे में होता है, ठीक है, उसके एडवेंचर्स के बारे में होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा डॉन क्विक्सोट का, सर्वेंटिस का जो स्पेनिश नॉवल था डॉन क्विक्सोट, या आप लोगों ने नाम सुना होगा जोसेफ एंड्रयूज का, ठीक है, जिनको फेमस पिकारस नॉवल बोला जाता है। एब्सोल्युटली राइट सिमरन, जिसमें जो हीरो है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वेश बदल के घूमता फिरता है। सो फर्स्ट पिकारस नॉवल किसको कहा जाता है? टेरर्स ऑफ द नाइट, तंबूरलेन, द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, द स्पेनिश कॉमेडी? वेरी वेरी राइट, एब्सोल्युटली राइट। यस, इट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर बाय थॉमस नैश, है ना, अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, एब्सोल्युटली राइट। Then we move on to question number 14. Who is the writer of Euphues the Golden Legacy, या जिसका नाम रोजालिंड भी है, ठीक है, और it is said रोजालिंड,
जिसके लिए जो है शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट के लिए इंस्पिरेशन ली थी। ये इसी ड्रामा से सोर्स जो है लिया था शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट के लिए। सो इट इज रिटन बाय थॉमस लॉज, थॉमस किड, थॉमस नैश और क्रिस्टोफर मार्लो। Who is the writer of Euphues the Golden Legacy? Very good, Shaina. Yes, it is written by Thomas Lodge. Very, very good. Simran, your answer is also right. Yes, it is written by Thomas Lodge. Then we move on to question number 15. Who wrote the romantic satire The Old Wives' Tales? Thomas Nashe, George Peele, Robert Greene और Marlowe. The Old Wives' Tales किसका वर्क है? थॉमस नैश का, जॉर्ज पील का, रॉबर्ट ग्रीन का या मार्लो का? The Old Wives' Tale is very right, Shaina and Simran. It is written by George Peele. Very, very good. Very good. हाँ जी, जरीना आपका आंसर भी बिल्कुल सही है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 16. The Life of Jack Wilton is the subtitle of Terrors of the Night, The Jew of Malta, The Unfortunate Traveller, The Wounds of Civil War. The Life of Jack Wilton किसका सबटाइटल है? It is the subtitle of Terrors of the Night, The Jew of Malta, The Unfortunate Traveller or The Wounds of Civil War. Hanji, waiting for some more answers and then I will give you the correct answer. The Life of Jack Wilton is the subtitle of The Unfortunate Traveller. Very, very good, Shaina, Simran, Sapna, Jyoti. Absolutely correct. Yes. Question number 17. Which of these works is not written by John Lyly? The Women in the Moon, Pendosto, Galatea और Endymion. कौन सा वर्क जो इसमें से है वो जॉन लिली का लिखा हुआ नहीं है? द विमेन इन द मून, पेंडोस्टो, गलेथिया या एंडिमियन? विच इज द ऑड वन आउट हियर? द ऑड वन आउट हियर इज The odd one out here is, should I mark it? It's Pendasto. Right? It's written by Robert Greene. Pendosto. All right. It's written by Robert Greene. Right? And I will not, I was about to tell you something, but then I reminded कि एक question और डाला हुआ है इससे related, so you'll get to know something more about this work. Question number 18. Which work of Robert Greene served as a source for Shakespeare's The Winter's Tale? आ गया उसी से related question. Minophone, The Card of Fancy, Mammalia और Pendosto. विंटर्स टेल जो कि शेक्सपियर का लिखा हुआ ड्रामा है, उसके लिए उसका जो सोर्स है वो कौन सा प्ले है? रॉबर्ट ग्रीन का कौन सा प्ले है? इट इज यस, वेरी राइट, इट्स पेंडोस्टो. वेरी राइट शाइना, इट्स पेंडोस्टो. Absolutely correct. All right, we move on to question number 19. हाँ जी, सिमरन, सपना, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है बच्चे, और थोड़ा जल्दी कीजिए आंसर्स, है ना? जल्दी जल्दी. With which writer did Robert Greene jointly create the work A Looking Glass for London and England? Robert Greene ने किस राइटर के साथ मिलके ये वर्क क्रिएट करा था? थॉमस लॉज, थॉमस नैश, जॉर्ज पील या मार्लो? किस राइटर के साथ जो है कोलैबोरेट करके ये वर्क कंप्लीट करा रॉबर्ट ग्रीन ने? अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड. यस, थॉमस लॉज इट was थॉमस लॉज, राइट? थॉमस लॉज और रॉबर्ट ग्रीन ने मिलके ये वर्क लिखा था, अ लुकिंग ग्लास फॉर लंदन एंड इंग्लैंड. Okay, let's move on to question number 20. Which is considered to be the first prose novel written in English? First prose novel written in English.
The Maid's Metamorphoses, The Scottish History of James IV, Euphues, or Galatea? The first prose novel is Euphues, right? It's Euphues by John Lyly. Hanji. Question number 21. The Triumph of Time is the subtitle of Pendosto, Menophon, Mammalia, or the Card of Fancy. ट्रायम्फ ऑफ टाइम किस प्ले का सबटाइटल है? पेंडोस्टो, मेनोफोन, मेमिलिया और द कार्ड ऑफ फैंसी? कोई बात नहीं सिमरन। हाँ जी ज्योति, एब्सोल्युटली राइट। इट इज द सबटाइटल ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो, है ना। हमने पीछे ही 2 क्वेश्चंस करे इससे रिलेटेड, और भी रॉबर्ट ग्रीन के पेंडोस्टो का सबटाइटल है द ट्रायम्फ ऑफ टाइम। गलत कर करके ही याद रखेंगे हम, ये भी मैं बात बता देती हूँ कि यहाँ पे जब आप मुझे गलत बताओगे ना, इसके बाद आप कभी गलत नहीं करोगे इन वाले क्वेश्चंस को, ये फिर आपके दिमाग में छप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको और 2 चीजें इसके बारे में बता रही हूं, और ये जब हम डिस्कशन करते हैं तो चीजें दिमाग से निकलती नहीं है, हम पढ़ते रहते हैं बुक्स में से, नोट्स में से, दैट इज समटाइम्स मोनोटोनस। लेकिन जब आप फ्रेंड के साथ, चाहे आपका कोई फ्रेंड आपको बैठ के पढ़ा रहा है ना, वो चीजें दिमाग में छप जाती हैं। तो दिस इज द वे दीज एमसीक्यूज आर गोइंग टू हेल्प यू। ये सवाल आप कभी नहीं भूलोगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 से पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब करें, राइट, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इन एडिशन टू राइटिंग प्लेज, William Shakespeare was also a poet who wrote over 150 sonnets, an actor who performed for royalty, a successful businessman. हाँ जी, प्लेज लिखने के अलावा शेक्सपियर और क्या थे? He was a poet who wrote over 150 sonnets, an actor who performed for royalty, a successful businessman. हाँ जी चांदनी, बिल्कुल सही। He was a businessman as well, है ना। 154 सॉनेट्स लिखी उन्होंने टोटल, ठीक है। बेन जॉनसन के एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, राइट, उसमें उन्होंने एज अ हीरो परफॉर्म करा, नोवेल का रोल करा, है ना। तो आर्टिस्ट भी थे, एक्टर भी थे, राइट, और बिजनेसमैन भी थे, राइट। बिजनेसमैन, मुझे भी, जब मैंने भी ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे भी बिजनेसमैन के बारे में पता नहीं था, बट ही वॉज अ बिजनेसमैन एज वेल, राइट। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ मेनी प्लेज डू वी नो दैट शेक्सपियर रोट? 11, 26, 32 और 37? कितने प्लेज कहे जाते हैं तकरीबन जो शेक्सपियर ने लिखे? हाँ जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट? Total number of plays written by Shakespeare. Yes, there are 37, right? कहीं पे आपको मैं बताती हूँ ज्योति एंड सिमरन, ठीक है, मैंने भी पढ़े हैं कि 32 कह देते हैं कि बाकी के शायद पता नहीं खुद शेक्सपियर ने लिखे थे कि किसी और ने लिखे थे, बट एक्चुअल में टोटल 37 प्लेस कहे जाते हैं शेक्सपियर के, ठीक है। ज्यादातर जो सोर्सेज हैं वहां पे 37 ही मिलेंगे, so we will not go with 32,
क्योंकि 32 एक दो जगह पे ही पढ़े हैं मैंने, बट इन द मोस्ट ऑफ द बुक्स और मोस्ट ऑफ द सोर्सेज दे से 37 प्लेस। इनफैक्ट जब मैंने मास्टर केडर की तैयारी करवाई थी तो मैंने 39 प्लेस के नाम लिखवाए थे बच्चों को, मैंने 39 प्लेस के नाम लिखवाए थे, बट फिर भी मैंने उनको कहा था कि टोटल 37 ही बोले जाते हैं। I'm here for you, Simran. We'll just mug it up. What kind of characters generally sing in Shakespeare's plays? शेक्सपियर के प्लेज में ज्यादातर सॉन्ग्स कौन गाता है? Kings and queens, servants, clowns, fools and other minor characters with low status, fairies or noblemen? Who generally sing in Shakespeare's plays? The characters who generally sing in Shakespeare's plays are generally the characters who are servants, clowns, fools. Yes, right. शाइना, सिमरन, चांदनी, सपना, जरीना। देखो सिमरन, हुआ ना आंसर करेक्ट, आगे वाले सारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25. Cursed be he that moves my bones. These phrases appears on Shakespeare's in his plays, gravestone, sonnet or poem. Cursed be he that moves my bones. It appears on in Shakespeare's plays, gravestone, sonnet और poem. कहाँ पे ये लाइंस पढ़ने को मिलती हैं? Absolutely right. You all are right. Yes. gravestone हो, tombstone लिखा हो, ठीक है? It's his epitaph, right? It's his epitaph, right? Epitaph है जो gravestone पे लिखा होता है, right? Question number 26. Dash is a history play by William Shakespeare, and the name itself is going to tell you कि इनमें से कौन सा history play है. King Lear, Midsummer Night Dream, Measure for Measure और Henry IV Part 1. It's Henry IV Part 1. Yes, absolutely correct. हाँ जी बच्चे, ग्रेवस्टोन को ही टूमस्टोन बोल दिया जाता है और ये जो वर्डिंग लिखी होती है उसको एपिटाफ बोल देते हैं। तो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड यू इन एनी वे कि शेक्सपियर का एपिटाफ, व्हाट इज दिस? दिस इज शेक्सपियर्स एपिटाफ, राइट? टूमस्टोन, ग्रेवस्टोन इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27. Hamlet and his problems, an essay discussing the flaws of Shakespeare's play, is written by. हाँ जी, Hamlet and his problems, जिसमें राइटर ने शेक्सपियर के बहुत अच्छे प्ले हैमलेट की बड़ी कमियां बताई हैं कि ये बड़ा लेंथी प्ले है, सुपरफ्लुअस हो जाता है कई बार, राइटर ने इडिपस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से जो है मैनेज नहीं करा, राइट? तो किस राइटर ने ये प्रॉब्लम्स, ये फ्लॉज डिस्कस करे थे अपने वर्क में? टी.एस. इलियट, यूवर विंटर्स, आई.ए. रिचर्ड्स और ग्रीनब्लैट? वेरी गुड। यस, टी.एस. इलियट का ऐसे है ये हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसमें उन्होंने हैमलेट के फ्लॉज बताए हैं, दैट इट इज अ लेंथी प्ले, राइट? कि शेक्सपियर इस प्ले में इडिपस कॉम्प्लेक्स को अच्छे से टैकल नहीं कर पाए एंड सो मेनी अदर थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 28. Who said that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? Ben Jonson, John Ruskin, Thomas Carlyle? It's nothing. The option is wrong. Who said this? Who made this statement that Shakespeare in his comedies has only heroines and no heroes? हाँ जी सपना, बिल्कुल सही। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ही ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वाली टर्म यूज करी थी एस इलियट ने। हाँ जी, यस इट इज जॉन रस्किन, बिल्कुल सही, इट इज जॉन रस्किन। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स जॉन रस्किन। यस, चलिए, देन वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. What was Shakespeare's first play? इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले माना जाता है? किंग लियर, हेनरी सिक्स, द टेम्पेस्ट और रोमियो एंड जूलियट?
which is considered to be the first play of Shakespeare? Yes, I'm waiting for some more answers, Shaina, and then I will let you know if you're right or not. Hurry up, students. Yes, Shaina and Sapna, both of you are correct. Henry VI is considered to be Shakespeare's first play, right? You have to remember that. And that is a very important question. You have to remember that. Chaliye, question number 30. In what year was Shakespeare's the first folio published? शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो जिसमें शेक्सपियर के प्लेस को इकट्ठा करके जो है पब्लिश करवाया गया था वो किस साल में पब्लिश हुआ था? 1620, 21, 23 और 29? इन विच ईयर शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो? क्योंकि देखो शेक्सपियर के जो प्लेस की जो डेट्स हैं वो कंफर्म नहीं है, ठीक है? तो फर्स्ट फोलियो में काफी प्लेस को इकट्ठा करके जो है छापा गया, फिर उसके बाद एक और फोलियो पब्लिश हुआ था. यस, इट्स 1623, राइट सपना, शाइना, सिमरन. और इसका उल्टा कर दो, 1632 में सेकेंड फोलियो, राइट? 23 का उल्टा कर दो 32 और ऐसे याद रखना आप. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 31. हाउ मेनी ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर क्लासिफाइड एज हिस्ट्रीज या हिस्टोरिकल प्लेज? कितने प्लेज टिपिकली जो है बोले जाते हैं शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेज? हाँ जी. 7, 10, 14 और 18? There are total how many historical plays written by Shakespeare? Absolutely right, Simran and Chandni. So total 10 plays are referred to as historical plays. Hanji, Zarina, right answer, bachche, very right. Okay, we move on to question number 32. In 1613, the Globe Theatre burned down. ठीक है, 1599 में जो ग्लोब थिएटर एस्टैब्लिश हुआ, शेक्सपियर जिसके साथ बहुत कनेक्टेड थे, ठीक है, वो बर्न हो गया ड्यूरिंग अ प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले? ठीक है, एक तो ये डेट याद रखेंगे, 1613 में इट बर्न्ड डाउन, बट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच प्ले? किंग जॉन, रिचर्ड II, हेनरी VIII और हेनरी V? So this is the question, Kuljinder, you asked me and we checked it then, है ना? We verified it then. Yes, it burned down during the production of Henry VIII. कुलजिंदर, आपकी हो गई स्क्रूटिनी? हाँ जी, आंसर सभी ने सही दिया है. Yes, Simran, I'll be coming with one more MCQ from Shakespeare. There is much more related to Shakespeare. Okay, congratulations, Kuljinder. Question number 33. To which Greek mythological character is Faustus compared in the prologue? Faustus को किस ग्रीक mythological character के साथ कंपेयर करा गया है उसके प्रोलोग में? Hercules, Perseus, Icarus, Theseus? Thank you so much, Kuljinder, but you already were so prepared at that time. You are actually a very good student. And all the best for your future. I know you will make a mark in life. Hanji, yes, it is Icarus, right? It's, yes, Icarus जिसने की वैक्सन विंग्स लगा के, है ना, वैक्स के विंग्स लगा के he tried flying near the sun, right? अपने ईगो में और अपने जो है मीन्स लाइक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, राइट, ही फॉरगॉट कि उसके विंग्स जो हैं वो वैक्स के बने हुए हैं एंड ही लाइक फ्लू टुवर्ड्स द सन, राइट, ही फ्लू टुवर्ड्स द सन, सो his wings melted and he had a fall in the sea. Hanji, Hanji Kuljinder, I am here for this only. I will make you prepare for UGC.
Right. Yes, it's Icarus. Right? Question number 34. Which one of the following dramas attributed to Christopher Marlowe is believed to have been his first? क्रिस्टोफर मार्लो का फर्स्ट प्ले कौन सा माना जाता है? द जू ऑफ माल्टा, डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज, एडवर्ड द सेकंड और तंबूर द ग्रेट. Which one of this is first play of Christopher Marlowe? Which play is considered to be the first of Marlowe? It is very right. Yes, absolutely right. Simran, Jyoti, Chandni, Kuljinder, Shaina, Zarina. Hanji, it's Tambour the Great. Absolutely correct. It's Tambour the Great. Question number 35. The Honorable History of Friar Bacon and Friar Bungay is a famous comedy by. किसका वर्क है द हिस्टोरिक ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन एंड फ्रायर बंगे? थॉमस नैश, थॉमस जॉर्ज पील, सॉरी, इट्स जॉन लिली, इज इट रॉबर्ट ग्रीन? द ऑनरेबल हिस्ट्री ऑफ फ्रायर बेकन और फ्रायर बंगे. Famous comedy. It's one of the famous comedy. Very, very good again. Yes, it's Robert Greene. Absolutely right. Moving on to question number 36. Who completed Marlowe's long poem Hero and Leander? मार्लो की लॉन्ग पोएम हीरो एंड लिएंडर को कंप्लीट करने में उनको मदद किसने करी थी? ही डाइड, राइट? मार्लो की डेथ हो गई थी जब वो ये वर्क लिख रहे थे. सो दिस अनदर राइटर कंप्लीटेड दिस पोएम. Thomas Nashe, George Chapman, Thomas Lodge, George Peele. Absolutely right, all of you. Yes, it is. It was completed by George Chapman. Absolutely, absolutely correct. Yes, George Chapman. चलिए, question number 37. Who is the writer of Arraignment of Paris? Who is the writer of the Arraignment of Paris? Thomas Lodge, Thomas Kidd, George Peele, or Marlowe? The writer of the Arraignment of Paris. The Arraignment of Paris is written by, it's written by, Hanji, I'm waiting for your answers. It's written by George Peele, right? It's written by George Peele. No worries. Question number 38. हाँ जी जरीना, right answer आपका बच्चे. सपना बिल्कुल सही. Okay, now we have this question number 38. Which work of Marlowe was completed by Thomas Nashe? मार्लो का कौन सा वर्क थॉमस नैश ने कंप्लीट करा था? डॉक्टर फॉस्टस. ओ वेरी गुड कुलजिंदर. तो घर पे तो दो दो पार्टीज हो गई. इट मीन्स आपके. आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर माई पार्टी. Which work of Marlowe was completed by Thomas Nashe? Dr. Faustus, Dido the Queen of Carthage, Tamburlaine और Jew of Malta. हाँ जी बिल्कुल सही जवाब. It is Dido. Dido the Queen of Carthage was completed by Thomas Nashe. I think पहले किसी क्वेश्चन में ये आंसर आ ही गया था. You're most welcome Kuljinder. That will be the happiest moment for me. मेरे स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आएंगे. मैं चाहती हूँ. Oh, that is so good, Sapna. Congratulations to you as well, बच्चे. I know you are living so far away, Kuljinder. So obviously कि अगर ऐसा होता है तो means that is like a proud moment for me. You have already made me proud. You, Narinder, Shinu, there are so many. You have all already made me proud. चलिए, question number 39. In which year Marlowe's famous tragedy Taksh is there? है ना? Taksh is there and so many students are there who have
You all have made me proud. In which year Marlowe's famous tragedy Dr. Faustus got published? 1604, 5, 6 or 9? हाँ जी, in which year Marlowe's famous tragedy got published? Yes, absolutely right. It got published in 1604. Right? पहले ये publish हुई थी 1604 में. All right, and it got republished. वापस से published हुई थी ये, and it got republished in 1616. Right? It got republished in 1616. चलिए. And the last question for today is the Spanish tragedy by Thomas Kyd was published in the year. कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी थॉमस किड की जो सबसे फेमस वर्क है रिवेंज ट्रेजेडी एक तरह से जो लिखी थी, और इसी रिवेंज ट्रेजेडी से शेक्सपियर बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे, जहां उन्होंने हैमलेट जैसी रिवेंज ट्रेजेडीज लिखी. ठीक है, दिस इज अ रिवेंज ट्रेजेडी. इसको बेस्ट एग्जाम्पल बोला जाता है रिवेंज ट्रेजेडी का. सो इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर. किस ईयर में पब्लिश हुई थी ये? इट वॉज पब्लिश्ड इन 1592. राइट बच्चे, डेट्स से रिलेटेड एक मैं आपको बात बताऊंगी कि डेट से रिलेटेड ज्यादातर जो नेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आते हैं क्रोनोलॉजी के. राइट या तो वो राइटर्स आपको दे देंगे, कुछ राइटर्स के नाम दे देंगे 1 2 3 4, और उनके लिए आपको बोलेंगे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनका राइटर्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या बनेगा. तो थोड़ा सा हमें डेट्स नहीं याद रहती है ना, बहुत सारी डेट्स होती है हमें याद नहीं रहती. तो थोड़ा सा इन चीजों पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं कि अगर किसी वर्क का नाम आ गया या राइटर के नामों की उन्होंने सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस हमें करेक्ट सीक्वेंस बताने के लिए कह दी, तो डू रिमेंबर द एजेस द राइटर्स बिलोंग टू. ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट ईयर नहीं याद आता, जो कि वैसे भी सच में बहुत मुश्किल है, तो राइटर से रिलेटेड जो एज है वो याद रखना है. राइट एज मतलब कि वो कौन सी एज को बिलोंग करते थे. ठीक है बच्चे, डेट्स को याद करने का तरीका बहुत मुश्किल है. दैट इज द फैक्ट. ठीक है, लेकिन जैसे मैं बोल रही हूँ कि क्रोनोलॉजी वगैरह से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उनमें आप एजेस याद रखिए कि कौन सा राइटर एलिजाबेथन एज को बिलोंग करता है, कौन सा जेकोबियन को बिलोंग करता है, तो उस अकॉर्डिंग आपका थोड़ा इजी हो जाएगा. और वैसे भी एक बात और कहूंगी जरीना, कि जब आप अभी देखो हमने स्टार्ट करा है ना, और जब हम इसको 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे ना, तो जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, देखो सारी की सारी डेट्स तो हमने याद नहीं रखनी होती, हमने डेट्स याद रखनी होती है इंपॉर्टेंट वर्क्स की. ठीक है, या जो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, राइट, उनकी बर्थ डेट्स हमने, बर्थ डेट एग्जैक्टली नहीं, उनका बर्थ ईयर हमने याद रखना होता है. तो व्हेन वी जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग देम, कीप ऑन रिपीटिंग देम इन आवर माइंड्स अगेन एंड अगेन, तो वो चीजें चाहे हमें टिल द एंड टाइम लगे कि याद नहीं है, बट व्हेन देयर इज द क्वेश्चन, व्हेन वी आर इन द एग्जामिनेशन सेंटर अटेम्प्टिंग आवर एग्जाम, तो चीजें अपने आप माइंड को स्ट्राइक करती हैं. ठीक है, तो don't just worry about them, but with revision these things will become easy. All right, so tomorrow again there will be MCQs from Shakespeare only. Right, read the summaries. Right, just go through the summaries, some important plays of Shakespeare जो मैंने आपको मास्टर कैरियर के टाइम पे भी बताए थे. कोई 8-9 प्लेज हैं जिनमें से क्वेश्चंस बार बार आते हैं, उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए. कोटेशंस को गो थ्रू करिए, because there will be questions from quotations as well. And rest is, I'll see you tomorrow at the same time. Not tomorrow, actually on Monday. Tomorrow is going to be Sunday, so it's an off. Tomorrow I'll see you on Monday at the same time with questions from Shakespeare only. और अगर आप कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो you can contact on any of these 2 numbers. All right, thank you everyone. Have a very good day and just keep learning. Thank you so much.